Okay, so let's start. And get access to our hunt. Firstly, let I add some salt. Let me teach you that what is a solution. Well, consider 3 glasses of water. In the first glass, I add some salt into the water. In the second glass, I add some sugar into the water. And in the third glass, I add some sand or pebbles into the water. After some times, I observe that salt is completely dissolved in the water. So we say that salt is soluble in water and form a homogeneous mixture, a uniform composition. By homogeneous mixture and uniform composition, I mean that we cannot spot or see the particles of salt and water in the glass with naked eye. Secondly, I observe that sugar is also completely dissolved in the water. So sugar is soluble in the water and form a homogeneous mixture, a uniform composition. By homogeneous mixture and uniform composition, again I mean that we cannot spot or see the particles of sugar and salt with naked eye. Thirdly, I observe that sand or pebbles do not dissolve in the water. So pebbles are insoluble in water and form a heterogeneous mixture or non-uniform composition. By heterogeneous mixture, I mean that we can spot or see the particles of pebbles and water with naked eye. Now listen carefully. Salt and water are soluble in each other to form a homogeneous mixture. So it is a solution. Secondly, sugar and water are also soluble in each other to form a homogeneous mixture. So it is also a solution. Thirdly, pebbles are insoluble in water and they form a heterogeneous mixture. So it is not a solution. Therefore, we define a solution as a homogeneous mixture of two or more substances is called a solution. Let me repeat it. So, yes, what is solution? Homogeneous mixture से क्या मुराद है? What is mean by homogeneous mixture? Abhiya. Teacher, What in is homogeneous mixture we can't see particles and the particles are dissolved. Yes, the particles are completely dissolved. जब कोई भी particles उसमें completely dissolve हो जाएगा mixture के अंदर, it means they are homogeneous mixture. अगर कोई Yes. particles water के अंदर completely dissolve नहीं होगा, तो it means they are heterogeneous mixture. Okay? तो ये समझ आ रही है homogeneous mixture क्या है? जब कोई भी particle water के अंदर completely dissolve हो जाएगा, तो they are called homogeneous. अगर कोई पार्टिकल जैसे पेबल्स थे, पेबल्स वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते ना, सो दे आर No. हेटेरोजेनियस मिक्सचर. ठीक है, अब आगे चलते हैं इस वीडियो की तरफ. यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes. yes. अच्छा, अब आ जाइए Yes. नेक्स्ट. अनम्यूट योर माइक. A homogeneous mixture of more substances called a solution. Now let me give you some common examples. Well, the first example of a solution is cold drink. In cold drinks, carbon dioxide gas, sugar and flavors are dissolved in water. मिस Yes, मिस आप क्या पढ़ा रही हैं? मेरे नेट का इशू था, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया. water vapors dissolve in the air to form a homo. बेटा हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. ठीक है, तो हम वही से रिलेटेड जो है पढ़ना है. वीडियो दिखा रही हूँ आपको पहले. ओके मिस. मिस प्लीज आप इस वीडियो की लिंक जो है ना व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा अपनी यूनिवर्सिटी पे. माइक म्यूट कीजिए आप लोग अपना. Homogeneous mixture or solution.
Thirdly, smoke in the air. Carbon particles dissolve in air to form a homogeneous mixture or a solution. Fourthly, alcohol plus water. Alcohol is dissolved in water to form a homogeneous mixture or a solution. अच्छा, अब आप लोग मेरी बात सुनिए, ये जो एग्जांपल्स हैं ये दिमाग में रखिएगा, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक और फॉग एंड क्लाउड्स, अल्कोहल, वाटर और स्मोक, these all are the examples of solution। और ये होमोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल है, क्यों? क्योंकि ये जो है दोनों चीजें आपस में कंप्लीटली डिसॉल्व है, इस वजह से इसको होमोजेनियस मिक्सचर कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। Solution. So these are the common examples of a solution. Now what are solutes and solvents? Well, let's consider a salt solution and a sugar solution. We know that in a salt solution there are two components, salt and water, while in sugar solution there are also two components, sugar and water. Secondly, we also know that in salt solution, salt is dissolved in the water, while in sugar solution, sugar is dissolved in the water. Thirdly, in salt solution, salt is present in smaller quantity and water is present in larger quantity, while in sugar solution, sugar is present in smaller quantity and water is again present in larger quantity. Therefore, we define solute as the component of a solution which is present in smaller amount is called solute. Let me repeat it. The component of a solution which is present in smaller amount is called solute. While we define solvent as the component of a solution which is present in larger amount is called solvent. Let me repeat it. The component of a solution which is present in larger amount is called solvent. So in salt solution, salt is a solute because it is present in smaller amount, and water is a solvent because it is present in larger amount. In sugar solution, sugar is a solute because it is present in smaller amount, while water is again solvent because it is present in larger amount. Now let me give you some common examples of solute and solvent. Well, consider a solution of vinegar. In vinegar, acetic acid is dissolved in water. So acetic acid is a solute and water is a solvent. Secondly, a solution of sugar and milk. In this solution, sugar is dissolved in the milk. So sugar is a solute and milk is a solvent. Thirdly, a solution of smoke. In the smoke, carbon particles are dissolved in the air. So carbon particles are solute and air is a solvent. Fourthly, alcohol plus water. In this solution, alcohol is dissolved in the water. So alcohol is a solute and water is a solvent. Finally, let me give you a bonus tip. Why water is called as a universal solvent? Well, it is because water has the potential to dissolve many substances. But remember that only polar substances or polar solutes are soluble in water. Non-polar substances or non-polar solutes are not soluble in water. So water is therefore called as universal solvent. This was all about solute, solvent and ओके, सो अब कहा मुझे कौन बताएगा? सबसे पहले बताएंगी सिनान जी। सिनान, व्हाट इज सॉल्यूट?
Teacher, solute is the thing that is present in the smaller amount. Yes, For exactly. example, salt हाँ is present in water. Salt is solute. अच्छा, यानी कोई भी चीज जो सॉलिड, एक और चीज आपको बताती हूँ, कोई भी चीज जो सॉलिड फॉर्म में होगी ना किसी भी चीज में, तो वो जरूरी नहीं है जैसे कि सॉलिड सॉलिड फॉर्म में होगी या स्मॉलर क्वांटिटी में होगी तो वो चीज क्या होगी, सॉल्यूट होगी। और कोई भी चीज की सोल्यूशन में जो लार्जर अमाउंट में होगी वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। जैसे कि इन द सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, शुगर इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट एंड वाटर इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। तो शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। ठीक है। अच्छा, अब कोई एग्जाम्पल बताइए फातिमा मौसीन, इतने सारे एग्जाम्पल हमने पढ़ी हैं। सॉल्वेंट की और सॉल्यूट की एग्जाम्पल बताइए फातिमा, सॉल्ट और शुगर के अलावा बताइएगा। Teacher, can I tell? Sugar and milk. Sugar is solute and milk is solvent. वेरी गुड। यस अब्दुल्ला फरहान। यस Teacher, alcohol and water. तो अल्कोहल red, क्या है, सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है? solute. सॉल्यूट And है water और वाटर is इज solvent. सॉल्वेंट। अच्छा, इन द विनेगर, विनेगर में कौन से दो कंपोनेंट्स होते हैं निजा? मिस वाटर सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है और जामिश्री सॉल्वेंट है। एंड वाटर। ठीक है। तो एसिटिक एसिड जो है विनेगर के अंदर जो है वो स्मॉलर क्वांटिटी में होता है और जो वाटर होता है वो लार्जर क्वांटिटी में होता है। तो एसिटिक एसिड इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। ठीक है। अच्छा, और कोई एग्जांपल देना चाहेंगे आप लोग? स्मोक। Miss, alcohol and water. अच्छा, अब्दुल्ला फरहान बताइए। अच्छा, अब्दुल्ला फरहान तुम बताइए, जाहिद बताएंगे। जाहिद बहुत अच्छे लग रहा है मुझे आज। जाहिद कहाँ गायब हो गए? जाहिद ने फोन कैमरा बंद कर लिया। जाहिद, स्मोक में कौन से दो कंपोनेंट्स होते हैं? स्मोक, जाहिद। अमसाल आप बताइए। यस मिस। स्मोक में कौन से दो कंपोनेंट्स होते हैं? स्मोक। मिस मेरा नेट का कनेक्शन सही नहीं था मिस, वो आवाज से बहुत अटक के आ रही थी। हाँ बताइए। Teacher, can I Teacher, tell? can I? बताइए Teacher, can I? जी, बताइए। Teacher, carbon particles and air. अच्छा, तो कार्बन पार्टिकल्स क्या है, सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है? Solute. और Solute. सॉल्वेंट क्या है उसमें? Air. एयर। ठीक है। तो कोई भी चीज किसी भी सॉल्यूशन में जब स्मॉलर क्वांटिटी में होगी तो वो होगी सॉल्यूट और लार्जर क्वांटिटी में तो होगी क्या होगा, सॉल्वेंट। Solvent. अच्छा, वो सॉल्यूशन में जब कोई भी चीज कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है तो उसे होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं? Hypogeneous. Homogeneous. एंड Homogeneous. सब्सटेंस व्हिच इज नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व, तो कोई भी सब्सटेंस Heterogeneous. Heterogeneous. हेटेरोजेनियस, क्या? Heterogeneous. हेटेरोजेनियस। अच्छा, अब ये समझ में आ गया। अच्छा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है? अलीशा। Miss, can I? नहीं, अलीशा बताएगी। अलीशा कहाँ है? Yes, teacher. अलीशा, व्हाट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट? Mass universal solvent is which वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? अच्छा, व्हाई वी कॉल वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट? बिकॉज दे डिजॉल्व मैनी सब्सटेंसेस इन इट, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस डिजॉल्व हो जाते हैं, इसलिए वाटर को यूनिवर्सल। आपने देखा होगा ना, वाटर में बहुत सारी चीजें डिजॉल्व हो जाती हैं। अल्कोहल भी डिजॉल्व हो रहा है और वेनेगर भी डिजॉल्व हो रहा है, बहुत सारी चीजें डिजॉल्व हो रही है ना, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है। okay teacher. अच्छा, अब यहाँ तक समझ आ गई। वीडियो में लिंक शेयर कर दूंगी आप लोगों को, एक बार अब आप ये वीडियो देख भी लीजिएगा। अच्छा, अब अपनी बुक्स खोलिए जरा, बुक्स खोलिएगा। पेज नंबर 68 और 69 पे आपको सॉल्यूशन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में पूरा बताया हुआ है पैराग्राफ में। ठीक है।
तो आप लोगों ने ये पैराग्राफ पढ़ना है अच्छी तरह से, और फिर कल मिस साहिबा की क्लास नहीं होगी, ठीक है? मिस कौन सा वाला? पेज नंबर 68 और 69 पे देखिएगा। टीचर कल भी मिस लाइबा की क्लास नहीं होगी? नो, उनकी क्लास मैं ही लूंगी कल, ठीक है? ओके। तो आप मतलब लोग मिस कल भी मिस लाइबा की क्लास नहीं होगी? मिस लाइबा की बेटा तबीयत सही नहीं है। तो मिस आप उनकी 2 क्लासेस लेंगी? जी, मैं उनका ब्लॉक लूंगी और आप सबको प्रेजेंट होना है कल, क्योंकि हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे। मिस कल मिस शाजिया की क्लास होगी जैसे आज हुई थी ज्योग्राफी में? जी नहीं, कल मेरी होगी। मिस हिस्ट्री में? जी जी।